अच्छा, नहीं मतलब आई विल शो दैट इन द नोट्स ओनली, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोल रहे, एग्जैक्ट वही, isn't it like exactly from notes? Yes sir. है ना, इसीलिए हम बोलते हैं लाइक स्टार्ट स्टडिंग द नोट्स। नोट्स मतलब इट्स नॉट दैट कि मेरे नोट्स इस वजह से, कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, सो दे विल गिव यू दीस एग्जांपल्स, और स्कूल में बहुत ज्यादा बाहर से नहीं पूछते हैं, तो बेसिक एग्जांपल्स ही वो पूछेंगे। तो एग्जैक्ट वुड्स रिएक्शन था, और जिसका एग्जांपल लाइक यू हैव दैट ऑन योर नोट्स ओनली, ठीक है। And that is why I also have taught so much in the IUPAC nomenclature. ये हो सकता है जरूर कि अगर आपको यहाँ से यहाँ, like if they have made the structure and given you the question, then it would have been easier for recognizing the reaction. So उसके लिए like I don't write here ना, अगर हम ये लिख देते ब्रोमोमीथेन टू इथेन, तो शायद इसके लिए आप ज्यादा बेहतर होता है। But I know कि I have given so much time in IUPAC nomenclature. Whenever you see this structure, your mind should itself strike that it is bromomethane and it is giving me ethane. Okay. So any other questions? No sir. Yeah, I also think like most of the questions are like, they're very direct questions. Thermodynamics, I can't see any question. No? There's no question from thermodynamics. The thermodynamics is for finals. अच्छा, तो वो फाइनल में होगा। Okay, fine. And what about you, Sarah? Like, when are your examinations? It's starting on 2nd of March. Finals या pre-board होता है? नहीं, pre-board नहीं होगा पटना में तो। Finals. Finals ना? Okay. When is chemistry? 2nd itself. Second? 2nd itself, like the first exam Second is itself. chemistry. The first examination is chemistry only. Okay. So, how's your preparation? It's What are you good, doing? but it's good, but hydrocarbons is a little confusing. Confusing. Okay. Okay. So, today I was thinking about states of matter, लेकिन I think what about others? Others में क्या समाई रही हैं? Should I take hydrocarbons? States of matter ठीक है आप लोगों का? Yes sir, that is easy. इजी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक आपको फॉर्मा मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाता होगा, है ना, मेनी थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स करते हैं, है ना, लेकिन टेल मी, कैन यू स्पेसिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? So we can't remember the reactions, like in which reaction what we have to add. Same with you also, Sarah? So for me, like these questions where we have to convert it from something to something, I don't get those. वो स्ट्राइक नहीं करता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए इसका जो एक ही इसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। और फिर आपको ना, जैसे अभी समायरा का एग्जांपल ले लीजिए, लाइक समायरा, आपको कैसा लगा जब हमने आपको ये इक्वेशन दिखा दिया जो आपके नोट्स में ही था? ये समायरा, हाउ डिड यू फील? लगा होगा ना कि अगर हम देख लेते तो हो जाता, Yes sir. है ना। सो इसमें हम ऐसे नहीं कि हम भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लाइक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक खत्म हो जाती है कि बच्चों को उसने रिएक्शन बता दिए, है ना। आई हैव फॉर ऑल ऑफ देम आई हैव डन एटलीस्ट 3 or 4 रिएक्शंस हर एक एग्जाम्पल में। तो अगर आप उसी को कर लीजिए ना बस, इवन इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू राइट नाउ, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट आप उन्हीं को कर लीजिए, दोबारा 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 दोबारा, जितनी बार हो सके लिख लिख प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तो नहीं आएगा। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आना ही आना चाहिए, उसमें भी आपको प्रैक्टिस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एंड जहां तक हमको लगता है, अच्छा देखिए, एक भी स्ट्रक्चर नहीं है समायरा आपके पेपर में, है ना।
केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है एक भी, राइट? Yes, sir. है ना? तो व्हाट एंड सारा लाइक हैव यू हैड एनी मॉडल टेस्ट पेपर या फिर कुछ इस तरह से हुआ है आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हाइड्रोकार्बन के ऊपर? No, sir. अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो व्हाट यू विल सी इन द क्वेश्चन पेपर इज ना दैट देयर विल बी वेरी लेस केमिकल स्ट्रक्चर। ऐसे आपको कोई बना के नहीं देगा कि डू दिस रिएक्शन, है ना? फॉर एग्जांपल CH3 Br अभी जो एग्जांपल दिया था हमने, सोडियम in the presence of dry ether and it is going to make CH3 so no one will give you like this। वो क्या देंगे? वो आपको नाम देंगे। so for that IUPAC nomenclature should be perfect, and in IUPAC nomenclature I don't mean that you have been given a structure and you have to name it, no, I mean IUPAC nomenclature का मतलब have to be able to make from name to structure, ठीक है? इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, but this is required। if you don't know how to convert a name to structure, आपके क्वेश्चन मतलब नहीं बनेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रोमोमीथेन नहीं बनाना आ रहा तो और उसको वुड्स रिएक्शन आ भी रहा है मान लीजिए, तो कोई तुक नहीं बनता है ना। अगर वो ब्रोमोमीथेन ही नहीं बना पा रहा है तो क्या ही वुड्स रिएक्शन करेगा, ठीक है? तो one thing is that IUPAC nomenclature इस वजह से important है that you have to convert many names to structure in the question paper। and how do you feel about IUPAC nomenclature? I will first of all ask that because अगर हम वुड्स रिएक्शन पढ़ा भी दें और आपको ये नहीं करना है तो कोई फायदा नहीं होगा वुड्स का। तो ये बताइए IUPAC nomenclature में कितना कॉन्फिडेंस है समायरा सारा आपको? और खैर बताने की भी जरूरत नहीं है। लेट मी गिव यू सम नेम्स ना, एंड देन आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा स्ट्रक्चर में। हाँ देखिए, many people they do this mistakes कि for example hydrocarbon में what are the main types of hydrocarbon that we study? Tell me. Alkane, then Alkene. alkene, alkynes, and then benzene and its derivative, right? Yes, Yes sir. or no? हाँ, तो many people do that mistake कि वो क्या करते हैं, they learn the IUPAC nomenclature of only alkene, alkene, alkyne and benzene, but इससे काम नहीं चलेगा because when you are going to write the product, for example I am doing chemical properties of alkene, if I am doing preparation of alkene, any of those things na, they will have some molecules, some compounds which are other than other than hydrocarbon, they will be having some functional group also। so functional group का nomenclature आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर चैप्टर है तो फिर ओनली नो फॉर हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन में हमने महारत हासिल कर दी है, अब हमको एक लंबे चेन में 10,000 भी आप ब्रांच दे दीजिए, हम नाम निकाल के दे देंगे। सो दैट शुड नॉट बी द केस। द केस शुड बी जितना हमने पढ़ाया ना, लाइक एवरेज दो मेन 10 फंक्शनल ग्रुप, उससे आपको एक एक अगर आप ब्रांच निकाल दें, है ना, तो नॉर्मल सबका आना चाहिए एक बेसिक लेवल पे, ठीक है? सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम इन विच यू हैव टू गेट माय नोटबुक। स्ट्रक्चर के सवाल देना आसान होता है क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, बट नॉट एवरी नेम कैन बी राइट। सो लेट मी गिव यू सम।
सी वाला आपसे मोस्ट प्रोबेबली ना हो, आपने पहली बार देखा हो इस तरह से, तो ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा, बस ये कहना चाह रहे थे। ये 5 कीजिए। Then the next topic that we will revise quickly is the SP2, that one, है ना, hybridization. -m का याद किया आपने समायरा? Yes, sir. Very good. पांच सवाल हैं, 8 minutes, okay, 8 minutes. उसके बाद प्लीज आप लोग खुद ही हाथ रोक दीजिएगा ऑनेस्टी से, then we will discuss it. And I don't think Nishkar sir is there today. When you are done, you just send the answer to Nishkar sir. I think you all will have his number. That is 931021. Okay, 9310284958. If you need the number, I will write that down. After you are done, just send the photo.
Okay, so I have received one answer. Sarah, Yes, do sir. you have? Did you send the answer to Nishka, sir? Yes, sir. Oh, got it, got it. Okay, so that is good. That is good. Huh? I'm really happy that you are able to make these structures. Fine. So now the C structure, the C structure. Now this is also a valid way, but you are never going to write it like this, okay? Because हम क्या करेंगे ना, we will have a focus. We write in one way, but this 2,4-hexadiene, it means that it is equivalent to hexa 2,4-diene. Okay, so these are same things. These are same thing. This is one way of writing it, and this is the other way of writing it. Both are correct, but okay, both are correct. So we have to know how to write them. But since we are focused, we will use one method, that is hexa 2,4-diene. Hexa 2,4-diene. We will not never write it like this, but this is also acceptable. That means if you get this in the paper, you have to write. So hexa 2,4-diene will be 6 carbon atoms, and in the second and in the fourth carbon atoms, we have a double bond. Okay, so I see that Sarah is more comfortable with the bond line, and let me write this for Samira. This will be CH double bond, CH single bond, CH2 single bond. This will be also CH, CH double bond, CH single bond, CH3. Okay, so this will be the structure. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 carbon atoms in the second position, and in the fourth position we have a double bond. Okay, is this clear? Yes or no? Yes. Okay. The 2,4-hexadiene is equivalent to hexa 2,4-diene. Similarly, see, we have only one thing that is different than the single bonds between carbon, है ना? जो हमारे normal structure होता है वो ये होगा. This is what I call as a normal structure, which has a simple name, simplest name, I would say. And if I get a double bond, so we have a bit of complex structure. So there is something different. That is why we need a number for this. That is why we need a number. Where is this double bond? So similarly, if you have something like this, let us say this is 3 and this is OH. So you have 3 carbon. So they can also write this as 3-propanol. Sorry, not 3-propanol, 2-propanol. 2-propanol. So what does it mean? It means that this OH group is in the second position. OH group is in the second position. Okay, so this will be only valid if you have only one functional group, only one function. For example, you can also have, let us say, double bond. So this can be also written as 2-propanol. Okay, 2-propanol. So you can have the number in front of the whole name when you have only one functional group. Also valid for unsaturations. Also valid for unsaturations. So you can take care of this. Don't get confused if you have some types of questions in which the number is before the name. Okay, write the hybridization of highlighted carbon atoms.
Okay, so 4 questions. I think you can send for this question, you can send the answer in chat itself. Just separate the answers by comma. You have to give 4 answers. I got 1 answer. So good, Samira. All are correct. Good, Sarah. Good, Sarah, correct. So these things are fine. Now the next thing that you need to know are प्लस एम एंड माइनस एम. उसको जल्दी से कर लेते हैं आइडेंटिफाई. Okay, rather I should say identify the ortho para and meta directing groups. So in a sense, I am asking plus m or minus m only. So 4 questions here.
So in the chat, when you're answering this now, then in the chat you will write, let me just number them, A, B, C, D, E. Okay, so just let me know which are the meta-directing ones. Okay, just let me know which are the meta-directing ones, and I will understand the others are orthopara. Okay, I've got answer from Samira. Samira, can you please recheck this? आप ये खुद से देख सकते हैं ना, नोट्स में आपके होगा, एक बार उससे कंपेयर करके देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं. Till that time, I'm waiting for Sarah's answer. Okay. So, fine. The few problems here. Okay, Samira. So, Samira, you are saying A. नाम भी तो ऐसे start होता है. Okay, Samira is saying A, C and E. Right, Samira? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. A हमको समझ में आ रहा है. नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड. ये भी आपका बॉन्डेड है ज्यादा. इट इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड. Why C? What is the criteria for minus M? More electronegative atoms should be attached to the key. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले की एटम should be attached with a more electronegative atom by a multiple bond. So in the C structure, what is the key atom? Carbon. Carbon. And carbon is bonded to? Hydrogen. So is hydrogen more electronegative than carbon? No. And also, is it bonded with double bond?
No. No. And I think I have written in the hydrocarbon chapter only the same example here, right? आपने चेक किया होगा तो शायद आपको मिल गया होगा कि ये प्लस एम है CH3, right? Yes. Okay. Next is okay. And Sarah said that Br. Sarah, why did you say Br is a minus M? It's a withdrawing group. हाँ, that is correct. एकदम सही. तब हमको ये लगता है कि आप थे नहीं उस क्लास में. Were you there in the last class of hydrocarbons, Sarah? I was there in the last week's class. I wasn't there on Monday. Okay, so ये आपने पढ़ा था effect of electrophilic aromatic substitution. There are two things: orientation, Yes. orientation and reactivity. ठीक है? देखिए, orientation में हमने क्या लिखा है? Plus M minus M, right? Yes or no? Yes, sir. Plus M minus M, है ना? इसमें you have to see the two things. Now there are very slight difference in electron donating group and plus M, electron withdrawing group and minus M. There is a slight difference. The difference is that when we talk about plus M and minus M, we are specifically talking about the orientation. So see, orientation, it is controlled by plus M and minus M. And for plus M minus M, we don't have to see whether it is donating or withdrawing group, right? Yes or no, Sarah? Yes, sir. So in plus M and minus M, what we have to see, we just have to see whether it is minus M or not. So what is the criteria for minus M? The key atom should be bonded with any electronegative atom by a multiple bond. Br is the only atom, so there is no question of any other multiple bonds of electronegative atom. And also Br has lone pair electrons, and since it has lone pair electrons, it will be electron donating. Na? कैसे होगा? Plus M के through तो होगा. It will be Yes. giving electron through the plus M, but Br, it is electronegative. It is so electronegative, the halogens, that they pull electrons through minus I. That is why it affects the reactivity of the haloarenes, but it doesn't affect the orientation. So when we talk about orthopara, I am talking about the orientation and not the reactivity. Okay. So इनको आप थोड़ा separate करके रखिए. Orientation and reactivity, these are two different things. When I am talking about where is the group going to attach, then I am talking about the plus M and minus M effect. And when I talk about how it is reactive in comparison to benzene, then I am talking about the electron donating and withdrawing capacity through plus M or minus M through plus I, minus I, everything. And I am looking at all of these things. So since in orthopara, क्या देखते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ mesomeric effect, and since it is plus M here, right? It is plus M, it is going to be orthopara directing and not meta directing. ये बस halogen के केस में ऐसा होता है कि it is plus M and electron. It is plus M, but electron withdrawing group via minus I, है ना? ठीक है? Okay. So this is it in the revision part. Now let us talk about reactions. Now you guys have problems with the reaction जो आप लोगों को याद नहीं होता. तो उसका एक तो ये है कि आप क्या कीजिए? You just start rewriting the reaction. Okay. उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Start rewriting the reactions. वो आपको एक बार याद हो जाएगा. Then you will be in a good position to write those reactions again and again. So for that, what you need to do? You start the chapter hydrocarbon, preparation of alkene, है ना? Notebook में preparation of alkene होगा? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, वहाँ आप ले चलिए किताब को अपने notebook में, and then tell me what is the first method of preparation? What is the first method of preparation? Preparation from alkyls. Preparation from? From alkyls. नहीं, गलत पढ़ रही हैं आप, ठीक से पढ़िए. Alkenes, right? Or alkane. हाँ, alkene ना, alkyl नहीं होगा, या तो alkene होगा या तो alkyne होगा, right?
It is alkene ना सारा? I wrote alkyl. वाह, हम नहीं, ये मिस्टेक हमसे भी हो सकता है. I also get sometimes do this mistake. शायद हमने ही लिख दिया हो, लेकिन हमने नहीं लिखा हो तब तो आपको डांट पड़ेगी. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स हमने तो लिखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Alkenes, no, I was telling about alkenes. That's what I asked. We were talking about I was talking about alkene. alkenes. नहीं, alkene. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फिर भी ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं. नहीं, ये तो हमने एल्काइन लिखा है यहाँ पे, एल्कीन्स में भी ठीक है. तो कैसे देखते हैं आप, है ना? देखना नहीं आता क्या आपको? ठीक से देखा कीजिए. खैर, where am I discussing today? डिस्कस करें ना, ठीक है. चलिए, एल्कीन में बताइए ना, पहला रिएक्शन बताइए एल्कीन में क्या है. फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है. तो उसमें क्या करना है आपको, लाइक फॉर, ऐसे आप स्टार्ट कीजिए, R CH डबल बॉन्ड CH R. What is the reagent? What is the reagent? reagent क्या नहीं याद है क्या आपको? देख के बता दीजिए. You guys have not written the reagent. reagent पूछ रहे हैं हम, Nickel palladium. है ना? लेकिन H2 भी तो होगा. H2 in the presence of निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम. ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको? R CH2 है ना? वो हम नहीं लिख रहे हैं, हम बस ये लिख दे रहे हैं, आपको एल्कीन मिलेगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंटली. ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. एंड यहाँ पे आप लिखिएगा एल्काइन. एल्कीन है यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइन. एल्काइन में भी क्या होगा आपके पास? R C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, R. Then you will have the same reagent. H2 in the presence of nickel, Pt. ठीक है. So like this you have to write all the reactions, है ना? तो एक सेक्शन आपका पेज का ऐसा हो जाएगा कि लाइक उसको एक लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है ना, नोटबुक में भी आप उसको कर सकते हैं. तो वही जैसे लाइक कीप इट हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ थिंग, जहाँ आपको ज्यादा स्पेस मिले. एंड देन यू राइट ऑल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन. एंड यहाँ पे ना यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट, you don't have to specify the exact type of substrate. Your main focus should be on the reagent part. ठीक है, reagent part में आपके पास main focus होना चाहिए. And then you must know what is that particular type of organic compound, whether it is alkene, alkyne. You can have haloalkenes जैसे bromine हो गया, तो Wurtz reaction हो जाएगा आपका. Then you can have the sodium salt of carboxylic acid. So decarboxylation reaction and pole-base reaction. These will be two reactions, है ना? इस तरह से like you will write all the methods of preparation like this, and then you will start with alkene. Okay, so now alkene is your substrate. Okay, alkene is your substrate, and from alkene you are going to prepare. So for example, if I do, if I react this with O2 and heat, that means combustion reaction. So it will give me n moles of CO2, right? And it will give me n plus 1 moles of H2O. Okay, and some heat it will be liberating. Then I can also do reaction with halogens in the presence of H nu, right? So it is going to give me what? It is going to give me alkyl halide RX. Okay, so you will write here Marco. And if you have the same thing, यहाँ पे तो नहीं होगा, like you won't have Marco-Nikov, it will be an alkene. Here you will just get alkene. Then you can further write another reactions. So एक पेज में क्या कीजिए, you try to write all the reaction of alkene, methods of preparation this side, and here you will be writing the these are the chemical properties, the chemical reactions of alkene in one page. Okay, so जो भी notes है आपका, उससे आप लोग summarize करने की कोशिश कीजिए.
So when you are doing this now, when you're summarizing things, when you're using your brain, or this is known as knowledge management. So when you're managing your knowledge, then वो knowledge आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा. So this is one way by which you can remember all these reactions. Okay, remember all these reactions. And next thing that you can do is make a list of name reaction, okay, and categorize according to alkane, alkyne and alkenes. Okay, so alkane, alkyne, alkene के हिसाब से, like for alkenes, what are the name reaction? So कौन-कौन से name reaction हम लोगों ने पढ़ा है? Like for the example, we have Wood's reaction in the method of preparation होता है alkene के. Then you have coal-based reaction, that is also in the method of preparation. Then after that, you have some name reactions in the sense that those reactions, they have a particular name. So halogenation, है ना? So if they ask you to write the halogenation reaction, then you must remember what are the reagents, है ना? For example, they ask you pyrolysis, तो आपको याद रहना चाहिए. So these particular reactions, they have a particular name. It is not like reaction of alkane with halogens. ठीक है? उस पूरे एक sentence का एक नाम होता है halogenation. So you have to remember those names also. For example, if they ask you what is combustion, so you should know that it is reaction with O2. If they ask what is aromatization, so aromatization में क्या होता है? You have alkene, and when you react with CrO3 in the presence of Al2O3 at high temperature, you are going to get benzene and benzene derivatives. Okay. So these are the simple things that you do, and उसी से याद होगा, ठीक है? So make a list of name reactions and categorize according to alkene, alkyne, alkenes, and also benzene, ठीक है? And benzene. So these are a few things that you can do. Okay. So have you summarized the reaction, by the way, by any chance, in one page? या फिर जो notes में वही है, उसी को पढ़ रहे थे बस अभी तक? जो notes में था उसी को पढ़ रहे थे आप लोग. Okay, fine. ठीक है. These are the extra things, okay? And I hope I don't have to say. Do all questions of NCERT. Like this is this goes without saying, like you have to complete NCERT questions. ठीक है? अच्छा, अब बताइए, like do you have anything else? Now I understand that ये आपको लग रहा होगा कि I'm not adding any value, I'm not giving you anything else. It is just that I can't give you anything else other than these reactions that I've already taught you. अब यहाँ पे आपके पास है, like you have to, अगर ये होता, like for example I started this ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम सारा ही लिख सकते हैं, है ना? I can write all the method of preparation right now. लेकिन यही काम आपको करना है, ठीक है? कि आप अगर जितना ज्यादा आप उस नॉलेज के साथ टाइम बिताइएगा, उतना ज्यादा ही देर आपके पास रहेगा. सो व्हाटएवर, ऐसा मत सोचिए कि सर आप हमको मेथड ये बना के दे दीजिए ना चार्ट, इसको हम याद कर लेंगे. वो चीज नहीं होना है. होना ये है कि चार्ट आप खुद बनाइए. समायरा का चार्ट और सारा का चार्ट अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग है ना, दोनों अलग है, दोनों का दिमाग अलग तरह से काम करता है. दोनों अलग, दोनों का चार्ट में ऐसा नहीं है कि एल्कीन हो फिर अल्काइन हो फिर एकदम इसी तरह हो. हमने यहाँ पे अल्काइन लिखा है, एल्कीन लिखा है, तो एकदम सेम उसी तरह लिखना है, एरो सेम होना नहीं. उसको आप पर्सनलाइज कीजिए, ठीक है? उसको पर्सनलाइज कीजिए. जितना ज्यादा पर्सनलाइज होगा उतना ज्यादा ही देर आपको याद रहेगा, ठीक है? कलरफुल करना है तो कलरफुल कीजिए उसको. तो स्पेंड टाइम विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाटएवर नॉलेज यू हैव, and that will enhance the chances of retention. ठीक है? अच्छा, anything else other than reaction आप बताइए, जो concept में आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो, like you don't understand what is happening here, किसी भी चैप्टर से. No, I think Samira and Saurabh. Okay, fine. See, I completely understand you guys, लेकिन थोड़ा मेहनत ही करना पड़ेगा आपको. There is nothing else that I can add right now. ठीक है?
both of you, Samaira and Sara. I think Samaira would have a better feel because जब लास्ट क्लास में हुआ थी उनका एग्जाम नहीं हुआ था. अब जब उनका एग्जाम हुआ होगा तब उनको लगा होगा कि सब चीज तो नोट से ही है. तो यू अंडरस्टैंड दैट समायरा, राइट? लाइक अब आपको ही पुश करना है थोड़ा. Yes, sir. है ना? एंड आप लोग रिवीजन क्लास मिल रहा है, जनरली होता नहीं है 11th क्लास में ना. यू डोंट हैव रिवीजन क्लासेस बिकॉज टीचर का ज्यादा एडिशन होता नहीं है. या तो एक कंसेप्ट आपको डाउट होगा तो कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, लेकिन देयर इज नथिंग मोर वैल्यू दैट आई कैन ऐड राइट नो अदर देन आई कैन गिव यू प्रॉब्लम्स. ठीक है, आई कैन गिव यू प्रॉब्लम्स, वो आप सॉल्व कर सकते हो. सो कन्वर्जन के हम प्रॉब्लम्स देते हैं आपको, ठीक है ना. हाइड्रोकार्बन्स में कुछ कन्वर्जन्स के प्रॉब्लम देते हैं, उसको आप कीजिए. मेक प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर नोटबुक. ठीक है, टेक द हेल्प ऑफ योर नोटबुक. एक है लाइक प्रोपाइन टू एसीटोन, ये आपको बनाना है. अब ये बताइए लाइक दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं प्रोपाइन और एसीटोन के? Sir, I don't know for acetone. एसीटोन, ठीक है. व्हाट अबाउट सारा? Same, so सेम. yeah, the acetone. एसीटोन नहीं पता, ठीक है ना. तो एक जनरल आप इसको ये कर लीजिए. एक कीटोन होगा, ये इतना आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, कीटोन होगा, कीटोन होगा. एंड दिस इज एसीटोन, एसीटोन. तो इसमें आपके पास व्हाट इज दिस एसीटोन में आपके पास ना ये एंटिटी होता है CH3 C डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब इससे आप नियरेस्ट कीटोन कौन सा बना सकते हैं? देयर कैन बी मेनी कीटोन व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस फ्रैगमेंट ना. हम ऐसे बना सकते हैं, दिस इज आल्सो अ कीटोन. आई कैन आल्सो मेक दिस इज आल्सो अ कीटोन, राइट? लेकिन इससे हम लोग क्या करना, लाइक द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट व्हाट यू कैन ऐड सो दैट इट विल बी कीटोन. अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या कीटोन होगा? हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड हो जाएगा? ये बताइए. अरे अभी क्या बन गया, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? दिस स्ट्रक्चर ये Aldehyde. एल्डिहाइड है ना. तो इसमें हम क्या ऐड करें तो कीटोन बन जाए? दिस इज नॉट अ कीटोन राइट नो ना. एक आपके पास यहाँ पे कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? CH3, राइट? कीटोन हो गया, करेक्ट है Yes, ना. sir. तो दिस इज एसीटोन. हम आपको अभी बता रहे, देखिए आपको और हेल्प होगा. एसिटिक एसिड, क्या आपके पास एसिटिक एसिड? ठीक है, तो एसिटिक एसिड में हमने डबल आई कर दिया, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, एसिटिक एसिड में फिर से एसिड है, एसिड का आप बना दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O. अब इस C डबल बॉन्ड O में आप क्या लगाइएगा तो एसिड बन जाएगा? बताइए. कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. टेल मी व्हाट शुड आई ऐड हियर? यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है? नहीं आ रहा आपको?
अच्छा, इस नाम से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नेम that whatever this molecule represent, this name represent, it is a carboxylic acid. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए इसमें दो पार्ट है ये, मतलब दिस इज ट्रिविया इन द सेंस दैट इट इज अ कॉमन नेम। यहाँ पे दो पार्ट है, एसिड और एक एसिड। ठीक है, एसिड का फ्रैगमेंट कौन सा है? एसिड का फ्रैगमेंट है ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है, अब इसको एसिड बनाना है तो हम क्या ऐड करते हैं यहाँ पे बताइए? OH. OH ऐड कर देंगे तो बन गया एसिड। सही है, Yes, sir. ये एसिटिक एसिड हो गया, है ना। उसी तरह देखिए एसिटल्डिहाइड, तो ये बताइए ये मॉलिक्यूल कौन से क्लास में आएगा? एल्डिहाइड में आएगा। है कि नहीं? एल्डिहाइड आएगा ना ये तो। Yes, सही है, sir. ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे भी दो चीजें, एसिड, एसिड में आपके पास ये फ्रैगमेंट जो है कांस्टेंट रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब उसके बाद यहाँ क्या लगाना है, एल्डिहाइड से पता चलेगा। बताइए इस फ्रैगमेंट में हम क्या लगाते हैं अब, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इस कार्बन के ऊपर क्या लगाना चाहिए? H. हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड बन गया, है ना। अब उसी तरह एक होता है एसिटोफेनॉल, एसिटोफेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? एसिड है, फिर उसके बाद एसिटोफेनॉन है। एसिड में क्या आ जाएगा आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड O। अब उसके बाद ये देखिए फिनॉन, ये कौन सा? ये तो फिनॉन भी हो गया क्योंकि दिस इज C डबल बॉन्ड O, ओन आ गया, कीटोन आ गया। लेकिन ये फीन ग्रुप कौन सा होता है? बेंजीन। इस कार्बन पे क्या लगाना चाहिए आप? बेंजीन लगा दीजिए तो एसिटोफिनॉन हो गया। गॉट इट? यस और नो समायरा, सारा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस मे हेल्प यू अ बिट। अक्सर लाइक माय मेन कंफ्यूजन एंड माय मेन एंगर विद केमिस्ट्री इन माय 11th स्टैंडर्ड वाज कि जब आपके पास एसीटोन में ये एसिड है तो 3 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड में ये 2 कार्बन कैसे हो रहा है? राइट, अगर आप ये दोनों को देखिए, एसिटल्डिहाइड विल बी यूज्ड, एसिटिक एसिड विल बी यूज्ड, एसीटोन भी बहुत यूज होगा। दे विल यूज एसीटोन, दे विल नेवर यूज प्रोपेन टू वन। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज द केमिस्ट दे हैव बीन, एक नाम याद हो जाता है आदमी को, है ना। घर में भले ही आपका जो अकीका हुआ हो आपके नाम से हुआ हो, लेकिन घर में अगर आपको कोई पुकारो नाम से बुलाया जाता तो वही नाम से बुलाया जाएगा, है ना। तो वही हो गया कि बहुत शुरुआत से केमिस्ट लोग जो है एसीटोन को एसीटोन ही बोलते आ रहे हैं। आईयूपैक ने स्टैंडर्डाइज किया बहुत लेट में, तो स्टैंडर्डाइज जब लेट में किया तो उतना ज्यादा लोगों के मुंह पे नहीं चढ़ा और वही चीज चलता आ रहा है। इस वजह से इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस माइंडसेट को रखिए कि एसिड हैज अ पर्टिकुलर फ्रैगमेंट दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड, उसके आगे जो कुछ भी है वो हमारे अनुसार है। अगर आई हैव टू मेक अ कीटोन देन आई विल ऐड द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट दैट इज CH3। if I have to make a acid then I will add the smallest fragment to make it an acid that is OH। अगर aldehyde है then I will add hydrogen। ठीक है, now since you know both of these things you can understand what is propyne and you also know what is acetone। you try this, I am giving you 5 minutes। आप ना दिमाग मत लगाइए, ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप ना ऐसे बस बैठ गए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने से बना लिया, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि वही आ जाएगी मेरे ऊपर, है ना, वही आ जाएगी हमारे ऊपर और हमको कोई बता के चला जाएगा कि कैसे यहाँ पर रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है। तो वो तो नहीं होने वाला है ना, वही तो आपको आएगी नहीं। वही की उम्मीद में है क्या कोई? सारा समायरा वही जानते हैं कि नहीं जानते? समायरा यू नो व्हाट इज वही? No. नो सारा यू नो व्हाट इज वही? No. वही नहीं पता आपको? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लाइक when the Quran was revealed, उस टाइम whatever the message Jibril Islam brought from the heavens, it is known as wahi। तो हिंदी में you can say it is आकाशवाणी टाइप, बट अब याद आ गया होगा शायद आप दोनों को, राइट समायरा, सारा? नहीं,
ओके फाइन, आकाशवाणी नहीं होने वाली है आपके ऊपर कि यहाँ से प्रोपाइन से एसीटोन कैसे बनाना है. सो हाउ यू हैव टू प्रोसीड इज go to the, what is the substrate here, tell me what is the substrate, what is the substrate, पहले यही आइडेंटिफाई कीजिए. एल्केन है, अल्काइन है, बेंजीन है, कौन से क्लास में आता है? Alkyl. एल्काइन. अच्छा, अब ये एल्काइन जो है, एल्काइन आपके सिलेबस में है, सही? Yes, sir. ठीक है, एल्काइन आपके सिलेबस में है. अब ये बताइए, एल्काइन जो है हमारे पास रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है? Reactant. रिएक्टेंट में है, यानी कि हम अल्काइन को बना नहीं रहे, अल्काइन से कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट? Yes. You are not preparing alkyne, sorry, you are not preparing alkyne. So now you tell me, कौन से सेक्शन में आपके पास होगा इसके बारे में कुछ भी हिंट? In which section of your notebook? प्रिपरेशन में होगा? प्रिपरेशन ऑफ alkyne में होगा या नहीं होगा? No. नहीं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkyne उसमें होगा? No. केमिकल प्रॉपर्टीज में होगा, राइट? समायरा एंड सारा. Yes. Yes. तो वहां पे ढूंढिए, है ना? वहां पे ढूंढिए. वहां पे क्या ढूंढिएगा आप? वहां पे इसको ढूंढिएगा आप, ठीक है? ऐसा कुछ मिल रहा है क्या हमको? कीटोन कहीं पे मिल रहा है क्या अल्काइन से रिएक्शन कराने के बाद? वो ढूंढिए. This reaction is also an important reaction actually. Alkyne case में तो at least in the alkynes case, because we get a very different kind of product, at least for them in standard C. मायरा को मिल गया. सारा, you are still fetching the reagent? Yes, sir. हाँ, ठीक है.
You have your notes complete ना सारा? Yes, sir. तो मिल जाना चाहिए तब तो आपको, क्या हो गया? Which reaction are you looking at right now, Samaira? एल्काइन का देख रहे हैं ना आप? एल्काइन में कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं? कुछ ही रिएक्शंस आई थिंक 5-6 रिएक्शन है. Yes, Sarah. Yes, sir. Which reaction are you right now looking at? Wait, we are supposed to check in the chemical properties. हाँ, तो आप कहाँ चेक कर रहे थे? प्रिपरेशन में? Okay, wait. क्या कर रहे थे आप बताइएगा सारा? What were you doing? I was actually unable to figure out where exactly to check. Like I was checking in the chemical properties, but I couldn't find it. हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइन मत ढूंढिएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में तो एल्काइन ही एल्काइन होगा. प्रोडक्ट्स में देखिए कहीं कीटोन दिख रहा है क्या? Chemical properties of the alkyne or? हाँ हाँ, नहीं, आप बताइए अब सारा कहाँ चेक कीजिएगा इसको? Where you should check? In which section will you get alkyne in the reactant? देखिए 3 चीजें हम पढ़ते हैं ना. Study the preparation, then we study the physical properties, and then we study the chemical properties. ठीक है, chemical properties. तो ये बताइए एल्काइन जो है रिएक्टेंट साइड में कौन से सेक्शन में होगा? जिस सेक्शन में होगा वहीं चेक कीजिए आप. ये आपको नहीं मिल रहा है पक्का, हमको लग रहा है. या तो देख नहीं रही हैं या तो आपके पास नोट्स कंप्लीट नहीं है. Where are you looking right now, Sara? जल्दी बताइए हमें. Don't have much time. Addition of water in the chemical properties. Addition of water. चलिए ठीक है. What is the next one? एडिशन ऑफ वाटर में बताइए. हाँ, एडिशन ऑफ वाटर में मिल जाएगा आपको. तो क्या हो रहा है एडिशन ऑफ वाटर में? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? What is the product? Ketone. Ketone ही तो है. You have same examples there. Yes, sir. Same है ना? तो बस यही होगा. जब आप एग्जाम देके अपनी नोटबुक में आंसर चेक कीजिएगा या फिर मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा, देन सिर्फ अफसोस रहेगा आपको कि ये छोटा सा था, पढ़ लेते तो आ जाता है ना. तो यही है, आप रिवाइज कीजिए इसको. लिस्ट बनाइए रिएक्शन का, समरी बनाइए रिएक्शन का. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना आप अलग अलग तरीके से रिएक्शंस को लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आपने एक बार लिस्ट बना लिया, फिर उसके बाद ऑल द नेम रिएक्शन जिसका कोई ना कोई नाम है. For example, ozonolysis, this is one of the name. I will call this a name reaction. Generally, name reaction उनको बोला जाता है. जैसे coal-based reaction is a named reaction. Woods reaction is a named reaction according to like the organic chemistry community. But right now आपके लिए क्या है ना? Everything which has a particular name.
आप आपने जैसे कहा रिएक्शन विथ वाटर, सो व्हाट आई विल से इट इज अ हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं उसमें कि हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं. इफ आई एम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन इट इज हाइड्रोजनेशन. सो व्हाट डज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स? ठीक है, नहीं होना चाहिए हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन क्या होता है यार? हाइड्रोजनेशन इज जस्ट द एडिंग ऑफ H2. इट विल गिव मी इन एल्कीन्स इट विल गिव मी एल्कीन. ठीक है, तो इस तरह से हर वो रिएक्शन जिसका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई उसका छोटा सा नाम, अगर वन वर्ड नेम है तो उसको आप लिखिए एक लिस्ट में. उसके बाद एनसीईआरटी का सवाल कीजिए, ठीक है, तब आपको हो जाएगा. उसमें मतलब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. ठीक है. Yes, sir. तो आई थिंक लेट मी सी. Tell me if you have doubt from any other chapter. If you don't have any other doubts, then I can end this class. और I will ask you to do lot of NCERT कीजिए ना कम से कम आप. अब एक बार कीजिएगा NCERT, there will be some questions जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी. आप फिर से कीजिए उसको बिना आंसर को देखे, एक बार समझ लीजिए कहीं से भी. Like you can look at notes, ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई गाइड हो कहीं से आपको आंसर मिल जाए NCERT का, उसको समझ लीजिए एक बार. फिर उसको सुबह आपने एक बार समझा, शाम में फिर से उसको क्या कीजिए, शाम में फिर से दोबारा कीजिए उसको बिना देखे. फिर आप अटकिएगा, ठीक है. ऐसे कुछ सवाल हैं जिसमें आपको याद नहीं होगा सही से. व्हाट आर द लाइक अभी ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, ऐसे वो स्टेप जो है ना उस जल्दी याद नहीं होता है. उनको कीजिए तभी कॉन्फिडेंस आएगा. एंड